अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ये हमारा EDS का 9वां लेक्चर है और इसमें हम आज एनर्जी के MCQ सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs हैं म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए, टाउन ऑफिसर के लिए, या जो ADFIA ADIB के जॉब्स आ रही हैं उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन. Fossil fuels are important source of energy in all of them. इंडस्ट्रीज में भी होता है, होम्स में भी होता है, ट्रांसपोर्ट में भी होता है. When animals and plant materials rot in absence of air, there is production of gas called biogas. Earth releases its heat by eruption of all of these. गीजर्स में भी होती है, हॉट स्प्रिंग्स में भी होती है, वोल्केनो में भी होती है. Plant materials, vegetation and waste from living things are regarded as biomass. Biogas is a renewable source of energy. Burning of fossil fuels are leading towards both A and B. Pollution भी होता है, global warming भी होता है. Energy sources which will not run out in long term are called renewable. To harness solar energy, products which are helpful are all of these: solar cells, solar heater, solar furnace. A dangerous activity which resulted in many deaths due to gas explosion or flooding is called coal mining. Need and demand of fossil fuels can be reduced by conserving energy. Toxic air pollutants like sulfur dioxide, and nitrogen oxides are produced by both A and B, oil and coal. Fossil fuels are regarded as energy sources which are non-renewable. Which of the following is a non-renewable energy source? Coal. What is the leading source of energy used in Pakistan today? B. Oil resources. Oil, coal and natural gas supply approximately 65% of energy used in Pakistan. ये 65, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है. 60% ऑयल एंड गैस की जो है और कोयल की सप्लाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली यूज्ड होता है. हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन इज अल्ट्रावायलेट. विच ऑफ द फॉलोइंग causes the least pollution when burnt? Natural gas. The main constituent of LPG is propane. The main constituent of CNG is methane. Which of these is not a renewable source of energy? Natural gas. The radiations emitted by a hot furnace called infrared. A solar cell is made up of silicon. ये आ सकता है जी, आजकल सोलर सिस्टम का जो है ना बड़ा रोल है, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई सोलर सेल जो है किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बस्टिबल? ऑक्सीजन होता है जी. इन अ सोलर पैनल द मेटल यूज्ड इज कॉल्ड सिल्वर. मेटल जो होता है सिल्वर यूज होता है सोलर एनर्जी. सोलर सेल कन्वर्ट्स solar energy into electrical energy. The source of energy of the sun is called nuclear fusion. Which of the following statements is not true about kinetic energy? The kinetic energy of something depends on its height. ये सही नहीं होते जी. ये तीनों जो हैं A, C और D सही है. Anything which is moving has a kinetic energy. The kinetic energy of something depends on its mass.
The kinetic energy of something depends on its speed. Which of the following statements is not true about gravitational potential energy? The gravitational potential energy of something depends on its speed. ये गलत है जी. Gravitational potential energy is due to its height. The gravitational potential energy of something depends on its mass. The gravitational potential energy of something depends on its height. There are 3 or 4 different methods of heat transfer. Which of the following is not one of them? न्यूक्लियर रेडिएशन सिर्फ नहीं होता, बाकी कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है. What does the law of conversion of energy state? Energy can not be made or destroyed, but it can be changed from one to another. इसका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है. एनर्जी के एक स्टेट होती है, उसमें ये कहा कि एनर्जी भाई तबाह नहीं हो सकती, ना ही बना दी जाती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है. नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स आर वेरी पॉल्यूटिंग एंड आर रनिंग out quickly. Which of the following is not an advantage of using coal or oil, gas or nuclear energy? There are no fuel costs. Which of the following is not an advantage of using renewable energy? They all give a very reliable power output. Sun, wind, running water, tides, biomass and geothermal sources are accounted as renewable. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि भाई एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल होता है, जूल कहते हैं इसको. एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कोयल. सोलर पावर होता है, विंड पावर होता है, वाटर पावर होता है. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑयल ओवर कोयल एज एन एनर्जी सोर्स? It is a liquid. Coal is formed from marine plants and algae. Which type of coal has the highest energy content? Anthracite. Adverse environmental impacts of coal mining include all of the following except decreasing input of carbon dioxide into atmosphere. बाकी ये तीन होते हैं: acid mine drainage, permanently altered streams and ecosystem subsidence and collapse of ground. Petroleum is formed from marine organisms. How is biofuel made? All of these. ये important question है जी. ये biofuel कैसे बनता है? By fermenting the sugar components of starch crops, by reacting the vegetable oil and oil fat with an alcohol, by treating plant oil or animal fat with hydrogen. How does ethanol's energy output compare to that of gasoline? It's 3/4 as much. What is the primary source of biodiesel? All of these. Adverse environmental impacts of oil and gas production include all of the following except damage to the ozone layer caused by oil spills. Ethanol is a biofuel and known as carbon neutral. Leading petroleum consumer in the world, USA. Leading petroleum producer in the world is Saudi Arabia. ये बड़े important question है जी. World largest proven oil reserve are in Saudi Arabia. Top coal producer in the world is China. ये 5 बड़े जो है ना बड़े important question है कि लीडिंग पेट्रोलियम कंज्यूमर जो दुनिया में है वो यूएसए है. लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसर जो पैदा करता है वो सऊदी अरेबिया है. वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वो सऊदी अरेबिया में है.
टॉप कोयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड चाइना में है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एनर्जी के। बाकी 10वां लेक्चर जो होगा वो हम बनाएंगे एक दूसरे एडीएस के लेक्चर के साथ में ज़रूर हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो आप इसको अपने नोटबुक में उतार दें। थैंक यू सो मच।